students. Good morning, sir. Good morning. I don't know Good why morning, sir. two links are appearing on my screen. So I click the first one, and uh, in that link only one student, Amreen, is there. Okay, why this problem is occurring, I have no idea. You can see my screen now. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let's start the class then. So in the last lecture, you have seen that we have gone through some technical terms that are very important and associated to data mining tasks. Okay, and few of them are like binary attribute. You get it that we have two values for this type of attributes, either true or false. Okay, and there also we have found two things, that is symmetric and asymmetric. If it is symmetric, then these two values will be equally important for us. And if it is asymmetric, then these two values may not be important. Then we have seen nominal, where more than two outcomes may be possible. Then generally we have seen that it is in alphabet rather than being integer form. Like the color yellow, green, black, red. Okay. After that, let's take this example again. Different colors you have seen, that gray, red, green, black, yellow. Ordinal means values that must have some meaningful order. Okay. जो मैं यहाँ पे red color में लिखा हूँ, that is very important. So although this is a simple fact, that but I think that you have to know these things. Okay. So ordinal means values that must have some meaningful order. Suppose there are grade sheets of few students which might contain different grades as per their performance, like A, B, C, D. यहाँ पे grades को ऐसे इस sequence में लिखना बहुत जरूरी है क्या? A, B, C, D. I hope you all know that grade A, grade B, grade C, grade D, all are actually giving some different standards. Okay. So what I mean to say that these values are sequenced with some meaningful order. So that comes under ordinal. Okay. Ordinal means values that must have some meaningful order. Then we have continuous. We have infinite number of values. It is in float type. So say measuring weight of few students in a sequence or orderly, like 50, 51, 52, 53, which will be 50, 51, 52, 50. Okay. So discrete means finite number of values. Marks of a student, आपको यहाँ पे दिखाई देगा शायद 50 आपको दिख रहा है कि ये plot. Of course, this can be 50.0, 51.0, but maybe we have 51.5 like that. Then discrete means finite number of values, like marks of a student in few subjects. Okay, so ordinal, continuous, and discrete. Now, when you go for implementing these facts, then you see that classification is based on building a function taking input feature factor x and predicting some outcome y. Now, classifier, that model is used, which is a supervised function. You all know that these things we are repeating, we have already discussed, that can be designed manually based on some expertise knowledge. Or level kya hoga, ya to yes or no, 1 or 0, like that. Now, classifiers can be categorized on two major types. First one is discriminative. It is a very basic classifier and determines just one class for each row of data.
and it tries to model just by depending on the observed data. Depends heavily on quality of data rather than on distributions. So discriminative. So discriminative, you can consider this is a very basic classifier, and what we try to determine is one class for each row of data. One popular example of this discriminative classifier is logistic regression. Okay, so to know about logistic regression in more details, I'll share you a link, okay, where I have implemented, I show you the implementation part of this classifier, okay. So acceptance of a student at a university, test and grades needs to be considered. Suppose there are a few students and the results of them are like student 1's test score 9 out of 10, grades 8 of 10, result accepted. Student 2 test score 3 out of 10, grades 4 out of 10, result rejected. Student 3 test score 7 out of 10, grade 6 out of 10, result to be tested. So यहाँ पे दो स्टूडेंट्स का स्कोर दिया हुआ है, वहाँ पे आपका लेवल भी दिया हुआ है, इसको आप एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड क्या कंसीडर कर सकते हो, लेवल, ओके। तो उसके बेसिस पे आपको क्या बनाना है, एक सपोज लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाना है जिससे ये टेस्ट करना है कि टेस्ट स्कोर 7 आउट ऑफ 10, ग्रेड 6 आउट ऑफ 10, तो रिजल्ट क्या होगा, ओके। एंड यहाँ पे हम एक क्लास डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो दिस फॉल्स अंडर discriminative. So when we have when we implement this text, okay, suppose logistic regression भी classify तो मैं यहाँ तो जब करोगे you'll get a diagram like this, right? Then generative, it models the distribution of individual classes and tries to learn the model that generates data behind the scenes by estimating assumptions and distribution of the model and used to predict some unseen data. Generative में one of the most popular example is the Naive Bayes classifier. So हमने discuss किया है in details. Okay, Naive Bayes classifier, you know that this is based on Bayes theorem. जहाँ पे आपने क्या consider किया था? Can you tell me that what are the two facts that we have considered while implementing this Naive Bayes classifier? Come on, answer this question first. Hello? Am I audible or not? Yes, sir, you are audible. Okay, Razu, you are there. Okay. बताओ मुझे आप नेप बेस्ड क्लासिफायर में मैं दोषिस बहुत नेप बेस्ड क्लासिफायर के लिए स्पेशली 3 या 4 लेक्चर दिया था इसके ऊपर, है ना। तो नेप बेस्ड क्लासिफायर में दोषिस मैंने आप लोगों को बताया था, those who are very important for finding out the values of nape based classifier, what are they? Sir, the presence of a particular feature is unrelated to other features. Yes. Sir, which means every feature has its own independent contribution towards recognition of an object. Yes. Okay. So there, I think you can also recall that there posterior probability as is there. Posterior probability and Yes, probability, right? The things we Yes, have considered under Naive-Bayes classifier. Very good. So I have again given one example of this. Suppose 100 emails and that too divided 1:4. Class A में 25%, that is spam emails, and class B में 75%, that is non-spam emails. Okay. Now if you want a user, if a is the with term test, कर सकते हो मेन्यू साथ। सपोज मैंने कॉन्सेप्ट किया एक वर्ड चिप, अगर ये वर्ड रहेगा, क्योंकि आप देखोगे कि जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा, ठीक है, वहां पे आपको देखोगे ये चिप प्राइस में दे रहा है या इस टाइप का कुछ, ये सारे चीज एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड चीज है, राइट।
when this is related to advertisement, you don't want to means waste your time by just going for this mail, right? So you, why don't you keep this inside this spam? So one user decides that if there's a word like SIP, अगर एक SIP word रहेगा तो उस email को टर्न करेंगे क्या, spam. ठीक है. अब क्या है, it seems to be that ये एक इसको एक बार screenshot ले लो. All of you please take a screenshot because I'm going to ask one question, one numerical related to this. ठीक है, सब लोग एक screenshot ले लो. It seems to be that in class A, that is 25% of data, 20 out of 25 emails are spam. 25 में से 20 जो है क्या हो गया आपका spam and rest not. Then, and in class B, that is 75% of data. ये number is very important. Class A में मैंने क्या consider किया हूँ 25%. आपको पता है कि मैं पहले बोल दिया था class A consists of 25%, class B consists of 75%, and class A is the spam mails and class B the folder for non-spam emails. Right. Now in class B, where means for 75% of data, 70 out of 75 emails are not spam. So out of others are rest are spam. Now, if the email contains the word chip, what is the probability of it being spam? आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये डाटा आपको सबको समझ में आ गया. तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक ईमेल में द ईमेल कंटेन्स द वर्ड चिप, ये चिप वर्ड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये स्पैम ईमेल है? If the email contains the word chip, what is the probability of it being spam? I'm giving you 2 minutes of time. You solve it and give me the answer. हेलो, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? या मुझे आई एम ऑडिबल और नॉट? राजू, यस सर. क्वेश्चन आ गया समझ में? ये हाँ सर, समझ आ गया. सर हम लोग को शायद से नेव वाइज क्लासिफायर सर हम लोग की क्लास में नहीं हुआ, शायद से पीआर में हुआ है सर. इस क्लासिफायर, अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं, बट ये प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो. ये यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तो आई थिंक यू विल गेट द सॉल्यूशन. यस सर. हाँ, एक बार थोड़ा कोशिश करो.
So what is the answer you have got? Sir, 80%. Okay, one student got 80%. Come on, other students. Okay, totally different answer. 20% from who is this? Sir, कौन बोल रहा है? Dittiman. ठीक है सर, दितिमान ने पैसे 20%. ओके, I think more than 40 students are there in this. Please try. ये थोड़ा लॉजिक है, अपने आप आंसर मिल जाएंगे. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक यू ऑल हैव. So using that simple probability concept, you can answer this question. Good morning. এনেকে গৈ পেলাই আমাৰ যে আগতে ক্লাছ Hello. Am I audible? Yes, Am I sir. audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, without wasting time, let's come to the solution. And solution is 80%. 80% is the correct answer. ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट ले लिया था और आंसर बता रहा हूं मैं 80%. 80% किसने कहा था? Who is the student who have said 80%? Sir, Manila. Yes. Tell me those who have got 80% as the answer. ठीक है, 20% मिल सकते हैं. मैं इसलिए दोनों ही आंसर को ऐसे किया है कि थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है. मैं इसलिए इसको थोड़ा असाइनमेंट की तरफ से रखा हूँ. You will comment in the recorded lecture that how you will get the answer as 80%. ये 80% कैसे मिलेगा आपको, ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे. ठीक है, क्वेश्चन मिल गया और आंसर भी आपको दे रहा हूँ. और नाउ यू विल टेल मी दैट how you will get the answer as 80%. It's very interesting, it's very logical. Okay, without knowing this Bayes theorem also you can answer this question. Facts all are given there. Now, some famous classifiers in machine learning, they are decision trees, Bayesian classifiers. Although this is a DWDM class, so you don't need to go each of them. But if it is a PR class, then I'll recommend that you should go through it. Or a PR class, I think I have gone through a few of them already. So decision trees, Bayesian classifiers, neural networks, k-nearest neighbors, support vector machines, linear regression and logistic regressions. These are the famous classifiers that we often use to build some machine learning models, right? तो इसके बारे में आप लोगों को
थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। So coming to the first one, that is decision tree. Okay. So decision tree, I hope you all know this is a kind of what? Data structure, right? Hierarchical data structure where we have some root nodes, we have some child nodes and branches and some leaf nodes. ठीक है. Each internet node denotes a test on an attribute. Each branch denotes the outcome of a test, and each leaf node holds a class level. हर एक नोड का क्या है? नोड तो आपको समझ में आ रहा है ना? ट्री याद है ना सबको? You guys know basic things, basic idea about the tree or not? राजू पढ़ा था ना ये पहले? यस सर, ट्रीज पर पढ़ा था ना? Yes, मतलब sir. आपके जो बेसिक, हाँ ठीक है। तो वहां पे आपको पता है नोड्स, ब्रांच, लिप नोड्स। लिप नोड्स मतलब जहां से आपका कोई भी चाइल्ड नोड्स आगे जनरेट नहीं होगा, ठीक है। रूट मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, ब्रांच जो दो नोड्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सॉरी। तो internal nodes denotes a test on an attribute. Each branch denotes the outcome of a test. Leaf denotes the class level. ये थोड़ा important है, ठीक है। और आप सभी को पता है the topmost node in the tree is the root node. Now the axis हमने डिस्कस किया था कि by computer मतलब आपके suppose you computer people's many come and them are buying computers from not buying, just looking at the computers. Okay, so we need to decide that which customer, if a new customer comes right at your shop, is he or she going to buy the computer or not? इसके लिए हम एक decision tree बना सकते हैं, right? So this is the decision tree for this, for the problem that the concept by computer, that whether a customer at a company is likely to buy a computer or not. So कैसे ये हमने बनाया? एज, यंग, मिडिल एज और सीनियर सिटीजन, राइट। यंग अगर स्टूडेंट है तो ऑफकोर्स अगर स्टूडेंट है तो उसको एक कंप्यूटर चाहिए होगा आपको। कंप्यूटर इज obviously going to be needed by a student, so there is a high probability that he will buy the computer. If that young person is not a student, so very least probability, or you can say no, this he is not going to buy the computer. ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए है। अब मिडिल एज पर्सन सीम्स टू बी वेरी बिजी। अगर आपके दुकान में कोई मिडिल एज पर्सन आ रहा है जो 50 इयर्स लाइक दैट, तो ऑब्वियसली वो अपना टाइम दे के अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके माइंड में और इनका जो ये है कंप्यूटर खरीदने का चांसेस ज़्यादा है। तो मिडिल एज पर्सन आ रहे हैं तो आप ये प्रोबेबिलिटी ये प्रूव कर सकते हो कि he is or she is obviously going to buy the computer. So yes, credit ranking, सीनियर सिटीजन कोई आ रहा है, सीनियर पर्सन आ रहा है तो क्रेडिट रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे, क्रेडिट रेटिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। द क्रेडिट रेटिंग इज फेयर, then he she is not going to buy the computer. If it's excellent, yeah, he is going to buy the computer. So this is the decision tree for the problem or for the concept by computer. और यहाँ पे क्लास लेवल्स क्या है? ये लीफ नोड्स है। लीफ नोड्स नो, यस, यस, नो, यस, मतलब ये लीफ नोड्स क्या डिनोट कर रहे हैं? आपका क्लास लेवल्स, राइट। ये रूट नोड है, रूट नोड एज। उसके बाद ये जो ब्रांच है, ब्रांच कुछ कंडीशंस ये दिखा रहे हैं कि यंग है, मिडिल एज, सीनियर, और यहाँ पे कुछ एक्शन जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम कहाँ पे कर रहे हैं? आपका मिडिल नोड, ठीक है। एक इंटरनल नोड के अंदर हम जो क्या परफॉर्म कर रहे हैं उस पार्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज द वे how we go for constructing a decision tree. I hope this concept is clear to you. Now, what are the benefits of constructing a decision tree or deciding a decision tree classifier for our problem?
बेनिफिट्स ये है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी डोमेन नॉलेज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट इज easy, very easy to comprehend, and the learning and classification steps of a decision tree are very simple and fast also. So these are the benefits of the decision tree. Okay, so I hope this decision tree concept is clear to you. सबको डिसीजन ट्री समझ में आ गया? हाँ सर। Okay, Yes, so sir. ठीक है. Now यही एग्जाम्पल्स को जो अभी मैंने आपको बताया था, उसके लिए एक टेबल दिया गया है, एस इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग, बाइस कंप्यूटर, ये टेबल दिया गया है. आप इसको आप देख सकते हो, बट इस टेबल को और इस टेबल के लिए आप खुद एक डिसीजन ट्री बना के देखो. ठीक है, मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, बट आप खुद भी कोशिश करोगे कि इस टेबल के लिए आप एक डिसीजन ट्री बनाओगे. ठीक है, क्योंकि जो सिंपल वर्जन, दिस वन यू विल ट्राई. आईडीटी है. सो बेसिक एल्गोरिथम जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. Basic algorithm is a kind of greedy in nature. I hope you all guys know that what does it mean by greedy with respect to design and analysis of algorithm. Greedy word का meaning क्या है? Greedy algorithm हम किसको कहते हैं? ये design and analysis of algorithm में आप सभी को पता है, because you have got this paper, right? Now this decision tree is constructed in a top-down recursive divide and conquer manner. ये अपने आप में एक एमसीक्यू आ सकता है कि डिसीजन ट्री इज कंस्ट्रक्टेड इन ए, ठीक है, बॉटम अप रिकर्सिव डिवाइड एंड कंक्यूर मैनर और टॉप डाउन रिकर्सिव डिवाइड एंड कंक्यूर मैनर. So which one will be the correct answer? This is a top down recursive divide and conquer manner. एक टॉप डाउन है, आपको पता है क्योंकि रूट से हम आ रहे हैं. रिकर्सिव है, ऑटोमेटिकली डिवाइड रिकर्सिवली एक ही चीज को हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिवाइड एंड कंक्यूर कर रहे हैं. ठीक है, so तीन चीज यहाँ पे है, टॉप डाउन, रिकर्सिव एंड डिवाइड एंड कंक्यूर. Then at start all the training examples are at the root. Obviously हम root से ही start करेंगे. Attributes are categorical. Now you tell me, what does it mean by categorical? I have already discussed this. Can anybody tell me what is categorical attribute? Categorical attribute किसको बोलते हैं हम लोग? Come on fast. मैंने कहा था ना कुछ सिंपल फैक्ट्स हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं प्लीज? अरे यार, कैटेगोरिकल मैंने बताया था ना आप लोगों को. व्हाट इज कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट? क्या है सर जो एट्रीब्यूट्स आर फाइनाइट एंड कंटीन्यूअस हो सर, लाइक एज एंड जेंडर. ओके, ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट अगेन. प्लीज concentrate on the little facts that I am discussing because they are very important. ठीक है, तो यहाँ पे attributes categorical है. If it is continuous valued, then they are discretized in advance. अब continuous value कैसा होगा, discretized क्या है, ये सभी हमने डिस्कस किया था. Then examples are partitioned recursively based on some selected attributes. सारे attributes हम select नहीं करेंगे, उसमें से कुछ attributes select करेंगे, उसके basis पे divide करेंगे. जैसे आपको ये दिखाया था, यहाँ पे देखिए. चलो ये example तो आप खुद करोगे. ये देखो, स्टूडेंट यस, सॉरी स्टूडेंट यस नहीं, ये तो आपका क्लास लेवल है. क्रेडिट रेटिंग, ये दो को कंसीडर करके मैं पूरा डिवाइड कर रहा हूँ, राइट? तो
इसी तरह we are going to select only some particular attributes. Okay. Now test attributes are selected on the basis of a heuristic or statistical measure. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अगर इफ यू वांट टू गो इनटू डेप्थ ऑफ द स्टडी, अगर आप लोगों ने पैटर्न रिकॉग्निशन पेपर सिलेक्ट किया है तो आप लोगों को पता होगा कि उसके बेसिस पे हमने अलग अलग डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट किया है, आईटीटी कंस्ट्रक्ट किया है, कार्ट. So there may be different decision tree based on this test at testing attributes measure point of view. Like information gain माने entropy select किया आप लोगों ने तो उसके लिए कौन सा decision tree होगा, ठीक है. तो ये basic algorithms रहेगा. आप कहाँ stop करोगे, कैसे stop करोगे, how you will stop this partitioning, the conditions for stopping partitioning. All samples for a given node belongs to the same class, then you will stop. Or there are no remaining attributes for further partitioning. It is majority voting is employed for classifying the leaf. Okay, so this is one more condition. Or there are no samples now, means you have already got through all the samples. So these are the conditions when you will stop these algorithms. This is, although this is very simple one, but this is very efficient one also. ठीक है. So यहाँ पे जो मैंने लिखा हूँ information gain, it is entropy. So I'm not going to details of this entropy because this is your you can go through it, but if you have interest, if you do have interest on this, particularly my peer students, you have to study these facts because these are the measures by which we can classify the different type of decision trees. Okay. So that's all for today. I hope whatever the topics I discussed today, all these topics are clear. Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. Then thank you. Have a nice day. We'll meet you in the next lecture. Thank you, sir. Bye bye.